The Factories Act 1948 is a comprehensive piece of legislation covering all aspects regarding the factories, namely approval, licensing and registration of factories, the inspecting authority, health, safety, welfare, working hours, employment of adult and young children, annual leave and penalties. The main objective of this act are to regulate working conditions in factories and to ensure the basic minimum requirements of safety, health, and welfare of the factory workers are provided. The object of the Act is to protect human beings from being subject to unduly long hours of bodily strain or manual labor. It also provides that employees should work in healthy and sanitary conditions so far as the manufacturing units will allow, and the precautions should be taken for their safety and preventions of accidents. In order to obtain the information necessary to ensure that its objects are carried out, the local government are empowered to appoint inspector, to call for returns and to see that the prescribed register and duly kept. The scope of this act is to extend to the whole of India. The provisions of the act are applicable to all factories, including belonging to central or state government, unless or otherwise excluded and the benefit of this act are available to persons who may be covered within the meaning of the term worker as defined by this act. Salient feature of the act. The coverage of the Act is confined to the factories using power and employing 10 or more workers on any working day of the preceding 12 months. Factories not using power and employing 20 or more workers on any working day of the preceding 12 months. And the factories especially notified under Section 85 of the Factories Act by the state governments and union territories. My dear students, now I will tell you about the important concepts and definitions of the words used in the Factories Act that shall be constructed according to the definitions given in the Act unless there is anything repugnant in the subject or context. In that row, the very important factor that we actually are studying is about the Factories Act. So I chose this to explain you. सबसे पहले आपको मैं इसको explain करूं. So the very first is factory. Factory is defined under section 2M. Factory is defined under section 2M, and we can say any premises including the precincts thereof where on 10 or more workers are working, or where working on any day of preceding 12 months, and in any part of which a manufacturing process is being carried on with the aid of power, or is ordinarily so carried on, means without the aid of power, wherein 20 or more workers are working or working on any day of the preceding 12 months, and in any part of which a manufacturing process is being carried on without the aid of power, or is ordinarily so carried on. So students, basically this is the factory means, and it refers
all such premises where the manufacturing process is undertaken. The most important word here I am going to mention in front of you all this कि फैक्ट्री वो होता है जहाँ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा हो. That means the manufacturing process which is undertaken within the plants. Plants मतलब जहाँ पे फैक्ट्री लगाई जाती है. This does not cover the outside area of plant. मीन्स कि जो फैक्ट्री है उसका एरिया ये डिसाइड है, ठीक है. दिस इज द एरिया ऑफ द फैक्ट्री, बट वो यहाँ ना लगा के आउटसाइड द प्लांट यहाँ पे लगी है ओपन, वो नहीं. एक पर्टिकुलर एरिया डिसाइड होता है फैक्ट्री बनाने के लिए. Each definition has to be constructed in the context in which it is used. Factory may include the whole premises of the factory. मतलब कोई एक पार्ट नहीं कि यहाँ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चल रहा है तो यही फैक्ट्री है, नहीं. जो पूरा प्रेमाइसेस होता है वो पूरा फैक्ट्री कहलाता है, ठीक है. बट ईच एक्सप्रेशन हैज टू बी गिवन द मीनिंग इन द कंस्ट्रक्ट वेयर इट ऑकर्स. फॉर एग्जाम्पल, जैसे उस फैक्ट्री में कितनी स्पेस होनी चाहिए, कैसा वेंटिलेशन होना चाहिए, फैक्ट्री लगाने वाले को क्या कहते हैं, ठीक है. फैक्ट्री में वर्कर्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, जो उसको सुपरवाइज करते हैं उनका क्या काम होता है. इस तरह के कुछ अलग अलग डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं जो हम इसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है. सो नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. स्टूडेंट्स, factory does not include mines, mobile units, belonging to the armed forces of the Union, a railway running shed, hotel, hotels, restaurant, or any eating place, and second thing, for computing the number of workers. The purpose of this clause, all the workers in different groups and relays in a day shall be taken into account. Any premises where 20 or more workers are engaged, 20 or more workers are engaged in the manufacturing process without the aid of power, or 10 or more workers with the aid of power, 10 or more workers with the aid of power, and here without the aid of power. Aid of power would be registered as a factory, ठीक है. ये जो with और without है ना, ये they can be registered as a factory, ठीक है. As establishment would be factory if the prescribed number of workers were employed on any day of the preceding 12 months. In counting of numbers of workers, temporary, part-time or piece rate workers must be included. Where 7 persons were employed permanently in the premises
and 3 persons were temporarily employed in repairs of machinery which had workers in the premises, and hence premises is a factory. The following premises have been held to be factories. Now I have to explain you about the 4 factors of Factories Act. In that slide, I will tell you in very brief of all these factors. Like number 1 factor is the factory is, यहाँ पे हम factory is लिख दे रहे हैं, ठीक है. अब इसके बाद हम उसके factors को देखेंगे. Factory is. So the first factor is factory is situational. Factory is situational. Means a factory must be situated on any premises with expression includes the precincts. Premises are a generic term meaning opening land or land with the building or building alone. Expression premises include precincts of appearing in section 2M, जो कि हमने आपको फैक्ट्रीज एक्ट का बताया, ठीक है. And the act does not necessarily means the premises must always have precincts. Now the second factor is factory relates to the object or purpose. The second factor is object और purpose. इसका मतलब तो पता ही है आपको कि कोई भी फैक्ट्री जो ओपन हो रही है वो किसी न किसी पर्पस से ओपन हो रही होगी, उसका मैन्युफैक्चरिंग का कोई पर्पस हो रहा होगा. So the object with which the premises or the precinct is used is nothing more than manufacturing process. ठीक है, और ये बताया गया है सेक्शन 2K में, where a manufacturing process is not carried on with the view of this use of sale, transport, delivery or disposal. It does not fall within the meaning of this act. Means यहाँ पे आपको जो ऑब्जेक्ट और पर्पस है वो टोटली किससे रिलेटेड आ रहा है? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से रिलेटेड आ रहा है, ठीक. नाउ द थर्ड फैक्टर इज a factory is the agency with which a manufacturing process may be carried or either with the aid of power or with the human or animal agency only. Means यहाँ पे जो थर्ड फैक्टर है हमारा वो आ रहा है POWER, power. That is from the section 2G. अब इस पावर में हम क्या पढ़ रहे हैं? That power has any kind of electrical energy. ठीक है, electric energy, और we can say जैसे हमने आपको पहले बताया एनिमल एजेंसी भी हो सकता है, ठीक है, ह्यूमन और एनिमल एजेंसी. Means power here means the electrical energy or any other form of energy which is mechanically transmitted. ठीक है, तो ये आपका हो गया थर्ड फैक्टर. अब हम आ जाते हैं अपने फोर्थ फैक्टर पे. फोर्थ फैक्टर मीन्स a factory relates to a labor.
Labor means workers. This is defined in section 2 under section 1 of the Act. Means if a manufacturing process is carried on with the aid of power, the day of the preceding 12 months is fixed at 10. But if a manufacturing process is carried without the aid of power, the minimum number of workers who are working or were working on any day of preceding 12 months must be 20. So for the word worker is concerned, it must be fall this definition under section 2(1) of the Act. As for minimum number of workers, the employment need not to be continuous. If it is proved with the records that there were the minimum number of workers employed on a single day during the last 12 months, then that will satisfy the condition. अभी आगे हम आपको लेबर का जब दिस डेफिनेशन बता रहे होंगे तब हम उसको बेहतर समझा पाएंगे कि ये जो हम आपको 20 डेज या 20 या 12 वर्किंग मंथ्स आपको बता रहे हैं, इसमें 10 डेज कैसे आ रहा है, 20 डेज कब आ रहा है, दैट आई टेल यू लेटर ऑन. ठीक है, तो फिलहाल यू मे अंडरस्टैंड दिस 4 सिचुएशन, 4 फैक्टर्स which is related with the Factory Act. So student, the second important expression of this Factories Act is worker. Worker means any person employed directly or through any agency, including a contractor, with or without the knowledge of the principal employer, whether for remuneration or not, in any manufacturing process or in cleaning any part of the machinery or premises used for a manufacturing process, or in any kind of work incidental to or connected with the manufacturing process, or the subject of manufacturing process, but does not include any member of the armed force of the union. स्टूडेंट्स, ये लॉ है तो लॉ में थोड़ा सा लैंग्वेज क्या होती है वो थोड़ी टिपिकल सी लगती है, बट इफ वी आर गोइंग इनसाइड दैट तो वो बहुत ज़्यादा टिपिकल हमें नहीं लगेगी. ठीक है, लाइक इन अ वेरी सिंपल वे आई कैन टेल यू अबाउट दिस. हमने आपको लास्ट में बताया था कि वर्कर्स कौन सी डेफिनेशन, वर्कर में जो है कौन सा सेक्शन आ रहा है, सेक्शन, yes, very correct, 2(1). A person is regarding as a worker within the meaning of section 2(1) of the Act, providing the following 4 conditions are fulfilled. It's basically not 2(1), it's basically 2(I). So the 4 conditions are: number 1, the person must be employed by the owner or occupier of the factory. ठीक है, ओनर और ऑक्यूपायर. अभी हम आगे आपको बताएंगे कि ओनर और ऑक्यूपायर किसे कहते हैं. द सेकेंड कंडीशन इज द पर्सन मस्ट बी एम्प्लॉयड इन द एस्टैब्लिशमेंट ईदर डायरेक्टली और थ्रू एजेंसी. जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया ना, ये देखिए, ये बताया ना कॉन्ट्रैक्टर वाली लाइन, दैट इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्टर या एम्प्लॉयड डायरेक्टली और थ्रू एनी एजेंसी. सो ये है हमारी कंडीशन नंबर 2, और ये वाली थी ऑक्यूपायर वाली नंबर 1. और थर्ड कंडीशन इज द पर्सन मस्ट बी एम्प्लॉयड इन द फैक्ट्री फॉर वेजेस और विदाउट वेजेस. जो भी पर्सन यानी कि वर्कर इसमें ज्वाइन कर रहा है, फैक्ट्री में एम्प्लॉयड हो रहा है, वो या तो विद वेजेस होगा या फिर
विदाउट वेजेस होगा, विदाउट वेजेस होगा, ठीक है। The person, the fourth and last condition, the person must be employed in any manufacturing process or in cleaning or any part of machinery premises used for manufacturing process in any kind of work incidental to or connected with the manufacturing process। ये देखिए ऊपर हमने आपको ये बताया, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस किसी भी मशीनरी का या प्रेमाइसिस के किसी भी एरिया में, वेदर वो इंसिडेंटल है या कनेक्टेड है किसी तरह के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से, तो ये हो गई इसकी फोर्थ कंडीशन। यानी कि आपको वर्कर के बारे में क्या समझ में आ रहा है कि वर्कर, पहले तो इसकी जो डेफिनेशन है वो हमारी हो गई जा करके आपके सेक्शन 2I से। दूसरी फर्स्ट कंडीशन, वो कोई ओनर या ऑक्यूपायर उसको एम्प्लॉय किया हो। अदरवाइज सेकेंड इज वेजेस हो या विदाउट वेजेस, ठीक है। एक और दूसरा मैंने आपको बताया, वेदर ही इज एम्प्लॉयड डायरेक्टली और थ्रू एनी एजेंसी इंक्लूडिंग द कॉन्ट्रैक्टर। एंड फोर्थ, ही शुड बी engaged with any part of the machinery और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, वेदर द क्लीनिंग और कुछ भी बनाने का भी हो सकता है, ठीक है। मशीनरी और premises used for the manufacturing process और any kind of incidental connected to the manufacturing process, और ये जो आपका लिखा हुआ है क्लीनिंग ऑफ एनी पार्ट ऑफ द मशीनरी, ठीक है। वो ये चार चीजें जो आपकी आ रही हैं, ठीक है, दीज फोर टर्म्स, लाइक नंबर 1 ये वाला, नंबर 2 ये वाला, नंबर 3 इज फ्रॉम वेजेस एंड नंबर 4 इज फ्रॉम दी उसका जो भी काम है जिसके लिए वो एम्प्लॉयड हुआ है, ठीक है। ही इज अ ब्यूटिफुल or we can say the handsome worker is doing his job continuously without waiting anyone, ठीक है। So I hope you can understand about the meaning of the worker।